Hello to my family. Welcome back once again to my channel. So today we are going to discuss ethics and business research. So basically ethics वो guidelines होती हैं, वो principles होते हैं जो being a researcher we have to follow, right? So let's see what are ethics and especially what are ethics in business research. So ethics in business research refers to a code of conduct of behavior while conducting research. So basically ethics are those principles and those codes of conduct that are related to our behavior and that we have to follow while conducting a research, any simple research or any research that is related to business, right? So ethical conduct applies to the organizations and the members that sponsor the research, the researchers who undertake the research, and the respondents who provide them with the necessary data. So basically ethical कंडक्ट की जो प्रिंसिपल्स हैं या इट्स कोड्स बेसिकली ये 2 से 3 कैटेगरीज पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फर्स्टली ऑन द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड to conduct research, any type of research. Secondly, towards the members and sponsors who do research, researchers themselves who are actively participating in that research, and the respondents. The respondents are those people who are basically our sample population. That may be our students, that may be the teachers, that may be employees, or any type of your sample population that are the part of the research, right? So let's see what are basically those codes of conducts, what are the points, what are the basic points that we have to follow, which are the code of conduct in research. The first point is informed consent. So let's see what is it. Researchers must obtain informed and voluntary consent from participants before involving them in a study. Participants should be aware of the purpose of the research, potential risks, benefits, and how their data will be used. So what is informed consent? Basically informed consent is a type of letter or an agreement जो कि दोनों रिसर्चर और पार्टिसिपेंट दोनों साइन करते हैं. इसके क्लॉज सारे पढ़ाए जाते हैं सैम्पल पॉपुलेशन से, आइदर दे आर स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयज और वट एवर दे आर. जो भी आपकी रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स होते हैं इनफॉर्म कॉन्सेंट उनसे साइन करवाया जाता है बिफोर इनिशिएटिंग एनी टाइप ऑफ रिसर्च. सो देर आर डिफरेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व इन दैट इन कॉन्सेंट फॉर्म, जिसमें पर्पस ऑफ रिसर्च, उसके पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स टुवर्ड द सोसाइटी, इसके अलावा रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन दैट रिसर्च, उसके अलावा जो जिस टाइप का डाटा उनसे रिक्वायर्ड होता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं हम पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं. और आफ्टर केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ दीज क्लॉज इन द इन्फॉर्म कॉन्सेंट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स आइदर टू पार्टिसिपेट इन दैट रिसर्च और to say no, that they're not going to participate in that research. So it's the decision of the participants either they are going to participate or not, right? So before jumping into the research, informed consent is the first step before initiating any research, right? So then comes privacy and confidentiality. Okay, this is another point in the informed consent about the privacy and confidentiality. The researcher वो इट्सेल्फ उनको बताता है अपने पार्टिसिपेंट्स को कि उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखा जाएगा. जो इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होगी, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उस रिसर्च की हद तक रिक्वायर्ड है, उसके अलावा वो कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करेगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. सो रिसर्चर शुड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स. Data should be anonymized or re-identified to prevent the disclosure of individuals' identities. So researchers must also secure data and only share it with authorized person. और अगर इन केस अगर वो डाटा किसी और से भी शेयर करना पड़ा तो उसके लिए भी जो पार्टिसिपेंट है उसकी कॉन्सेंट की ज़रूरत होगी, उसके अप्रूवल की ज़रूरत होगी. और अगर अप्रूवल नहीं मिलता, पार्टिसिपेंट अप्रूवल नहीं देता कि उसका डाटा किसी और से शेयर किया जाए, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिसर्चर कि उसका डाटा जो है कॉन्फिडेंशियल रखे, प्राइवेसी मेंटेन रखे, ब्रीच आउट ना करे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. Third point is data accuracy and integrity.
So, researchers should collect, analyze, and report data accurately and honestly. Manipulating data or results to support a particular agenda or bias is unethical. This directly means that the accuracy is the must. In case if आपके हाइपोथेसिस या आपके ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक आपके रिसर्च के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इन दैट केस आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी मर्जी के मुताबिक. दैट इज टोटली अनएथिकल, राइट? मैनिपुलेशन is against the code of conduct in research, right? So we're not going to manipulate the data, we're not going to add any point that will support our hypothesis but is not according to the results, the actual results, right? So this is accuracy and integrity. Conflict of interest. Researchers should disclose any financial, personal, or professional conflict of interest that could potentially influence the research or its outcomes. Transparency is crucial. It means that conflict of interest is totally against the ethical guidelines. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक चीज़ है और आप उसको हाईलाइट करते जा रहे हो, either it is financial, personal or professional, then this is against the code of research, the ethical guidelines we follow in research. हम लोगों ने बहुत ही न्यूट्रल होकर रिसर्च करनी है. ऐसा नहीं है क्योंकि these are the aspects of my interest, so I have to take these aspects and do my research, right? आपको न्यूट्रल होकर रिसर्च करनी है. आइदर आपको रिजल्ट्स अपने अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट लगे या फिर ना लगे, उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल बायस इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. So this is all about conflict of interest. Next point is plagiarism and attribution. Proper attribution and citation of sources are essential in research to avoid plagiarism. Researchers should give credit to the original authors and sources of information. So, आपके रिसर्च में जितने भी पॉइंट्स आप हाईलाइट करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, जितना भी मटेरियल आप ऐड करोगे, यू हैव टू give the citations, you have to give the reference in each and every sentence. You have to give the citation and reference because there is nothing new you are going to do. आप ऑलरेडी हुए हुए काम पर दोबारा से चेंजेस करें, उसको मॉडिफाई करें, उसमें मजीद रिसर्च करें. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to give references and citations with each and every sentence that you are adding in your research. So this is all about plagiarism and attribution. You have to give the credit to the people और द ऑथर्स जिनकी रिसर्चेस से आप वो इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी रिसर्च का उसको पार्ट बना रहे हैं, राइट? सो रिस्पेक्ट for participants. Researchers must treat participants with respect and dignity, ensuring that they are not harmed physically and psychologically during the research process. This includes obtaining informed consent and debriefing participants as necessary. So, respect is a must and the first aspect that we have to follow as a researcher. We have to give respects to all the participants who are the part of our study or research. So we're not supposed to harm them physically or psychologically. अगर हम अपने benefit के लिए उनको either physically तो it's not possible but psychologically through our statements, through some negative statements or through demotivation, अगर हम उनको किसी तरीके से भी harm करें तो this is against the code of conduct that we have to follow in research. So we have to maintain respect and integrity towards other. So, beneficence and non-maleficence. Researchers should aim to benefit society through their research and avoid causing harm. The potential benefits of the research should outweigh any potential risks to participants or stakeholders. It means that आपकी जो भी research है उसका कोई ना कोई society को बेनिफिट हो, राइट? ऐसा नहीं है कि उसके बेनिफिट्स बहुत लेस हैं और वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा हार्म करिए. अगर उसकी नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं और पॉजिटिव एट्रीब्यूशन बिल्कुल लिमिटेड है या ना होने के बराबर है तो ऐसी रिसर्च एक पॉजिटिव रिसर्च या एक एक्यूरेट रिसर्च नहीं कंसिडर होती, राइट? सो रिसर्च का बेसिकली बेनिफिट होना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट एंड टुवर्ड्स द पीपल who are the part of the study or elsewhere, right? जो कि आपकी स्टडी का पार्ट हो उनके लिए भी बेनिफिट हो या जिस मकसद के लिए आप स्टडी कर रहे हो सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए वो हो. अगर बेनिफिट बहुत कम है, लॉस बहुत ज़्यादा है तो आपकी रिसर्च का पर्पस फुलफिल नहीं होगा.
So next point is compliance with regulations and guidelines. Researchers should adhere to relevant laws, regulations, and professional codes of conduct related to business research, including institutional review board. So institutional review board एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से जिस जो अप्रूव करता है बेसिकली कि जो भी रिसर्च हुई है वो अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, द कोड ऑफ कंडक्ट हुई है या नहीं हुई, राइट? सो the researcher should adhere to relevant laws, जो भी laws, rules and regulation and professional ethical codes हैं रिसर्च करने के, उनके अकॉर्डिंगली अगर रिसर्च होगी तभी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड उसको अप्रूव करेगा, अदरवाइज डिसअप्रूव करेगा. The next point is research with vulnerable population. Special care should be taken when conducting research with vulnerable populations such as children, the elderly, or individuals with limited capacity to provide informed consent. Vulnerable means जो कि आपको in research we consider vulnerable population is that type of population जिससे आप इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, वो इतना अप्रोप्रिएट डाटा आपको नहीं दे सकते, राइट? उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें ओल्ड एज के लोग भी आ जाते हैं जिनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. तो ऐसी पॉपुलेशन के साथ आपको बहुत स्पेशल केयर के साथ रिसर्च करनी चाहिए, उनसे डाटा बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, केयर के साथ आपको कलेक्ट करना चाहिए, उनको आपको बहुत ही सेंसिटिव वे में हैंडल करना चाहिए. ठीक है, so this is all about research with vulnerable populations. Next one is replication and validation. Researchers should be open to the replication of their studies and validation of their findings by others in scientific community. This helps ensure the reliability of research. It directly means कि आपकी रिसर्च की वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, राइट? आपकी रिसर्च ओपन होनी चाहिए कि उस पे मज़ीद रिसर्च की जा सके, उसकी लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हुए उस पे मज़ीद रिसर्च की जा सके. आपके टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए, आपने ऐसी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करनी है बीइंग अ रिसर्चर जिसकी सोसाइटी को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है एट द सेम टाइम. सो without any requirement, without any need, there is no need to do research, right? So it is very important कि आपकी सोसाइटी को इसका बेनिफिट हो, आपकी रिसर्च ओपन एंडेड हो जिसको यूज़ करते हुए मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सकें टुवर्ड्स द सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन.